Hello, everyone. Hi, I'm Sukanya, and I'm your English trainer and mentor. Just give me a quick confirmation in the chat box whether you're able to see me and hear me clearly so that we can start with today's session. I can see in the comment section that some people are really eager for this session to start, and of course, why shouldn't you be? So, today's class and today's session is primarily about how you can ace your English section in 150 minutes. Now, obviously, looks a bit gimmicky, but the thing is, what we are going to do here today is discuss some core concepts which are very, very important pertaining to your CLAT preparation and your English preparation, right? And I think you and I both are aware that our days are numbered when it comes to CLAT preparation. So why not, strategize it and make it the best possible journey for ourselves. So yeah, that's what we are here with today. And today we are going to discuss two important core concepts. You might have seen, you might have given several mocks where you must have definitely encountered main idea and title based questions. Correct me if I'm wrong, but that is one of the most important, most dominant question type that you might see. Now, the thing is, today we are going to discuss some of the common traps that people usually encounter. Then we are also going to discuss how we can come or boil down to one conclusion when it comes to main idea and title. And then we are going to practice some questions together so that you can feel that you have incorporated the knowledge that you have just received. Okay. If the ground rules are clear, shall we start? All good? Okay. So as you can see, today's class is about main idea and title. It's going to be a short and sweet session of 25 minutes, and we are going to have like a six session long series where 25 minutes would be the ideal time where we learn something important, some kernels of wisdom. And yeah, let's get started. So, when it comes to main idea, the first thing that you need to identify is whether you know how to paraphrase a particular passage in your own words. Now, it's very common that you read an article and you probably read editorials as well, and you probably solve tons and tons of assignments. But the thing is, if you do not know how to summarize it in your own words, then you will always falter in order to identify the main idea questions. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंटर है, जो सबसे पहला पॉइंटर है, एज यू कैन सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस हमें ये समझना है कि सबसे पहले अपने आप से पूछो, आइडेंटिफाई द टॉपिक. ठीक है, आइडेंटिफाई व्हाट्स बीइंग सेड अबाउट द टॉपिक and can I sum it up in my own words? Once you have done that, as you can see, before looking at the options even, try to say the core idea in one sentence, then match with the closest option. ठीक है. अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको शायद मेन आइडिया या समरी निकालना बहुत मुश्किल लगता है. कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस several more points to make it easier for you. ठीक है. And yes, Kumkum, of course, this is helpful for ALET as well. Then moving to the first point here. Finding the main idea, think what is the author really trying to say. It's very, very important why the writer has written whatever he has written. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो खुद से पूछना चाहिए हमें वो ये है कि ये राइटर मुझे कन्वे क्या करना चाह रहा है. व्हाट कुड बी द थॉट प्रोसेस दैट मेड हिम राइट दिस आर्टिकल. ये सबसे पहला क्वेश्चन है. एज यू कैन सी, स्पॉट रेपिटेशन विच इज ऑल्सो कोर मैसेज. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों ने देखा होगा व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज विच इज 3-4 पैराग्राफ्स लॉन्ग, बहुत बार the same idea keeps on recurring, keeps on getting repeated over and over again. That is basically your cue to pick up that hint. अगर तब भी तुम लोग हिंट नहीं पकड़ पा रहे हो तो ये हम सबको ही पता है कि किसकी बेवकूफ़ी है. ठीक है. सो अ repeated idea is something which is the main idea. और एक चीज याद रखना, मेन आइडिया जो होता है वो पहले तो एक थरो रीडिंग के बाद ही समझ में आता है. सो डू नॉट जस्ट ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ बाई रीडिंग वन पैराग्राफ. दैट इज नेवर गोइंग टू हेल्प. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ड्स आइडियाज रिपीटेड अक्रॉस द पैसेज यूजुअली रिवील द मेन थीम. इफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी. अगर आपको 4 पैराग्राफ्स में से 3 में लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है तो ये समझना पड़ेगा कि द राइटर वॉन्ट्स यू टू फील दैट वे. दैट मीन्स दैट इज द कोर आइडिया. If in the 3 paragraphs the writer is talking about how dance can actually help you elevate your psychological tensions,
not tension, psychological condition, and make you feel happier. So that might be the main idea. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम देखें सेकंड पॉइंटर, फोकस ऑन ऑथर्स एटीट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या राइटर सुपर हैप्पी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. इज ही फीलिंग डीपली saddened by something? Is he feeling furiously angry about something? Is he in a celebratory mood where he is trying to celebrate some recent achievement? जब तक ये पकड़ में नहीं आता है तब तक मेन आइडिया भी पकड़ में आना बहुत मुश्किल है. तो as you can see, look for the tone. Whether he is being critical का मतलब है, is he harshly criticizing somebody? Is he very negative about this particular person? Whether he is celebrating, whether he is being analytical का मतलब होता है when he is discussing the pros and cons of a particular issue, when he is evaluating a problem, जहाँ पे facts जो होते हैं उनको evaluate किया जाता है, that is analytical. So moving forward, the main idea is not neutral if the author clearly leans one way, which means अगर तुम लोगों को clearly दिख रहा है that the author is taking sides, that means he is biased, right? He is being partial to one side more than the other. That means it can never be neutral, it can never be factual in that case. ठीक है. और Shivam, I think please concentrate on the class itself rather than discussing what is important to ALET, because ये भी ALET का ही topic है तो ये तुम्हें ALET में भी help करेगा ही. ठीक है. So coming back to the next slide, filter out examples or illustrations. So एक चीज याद रखना, there will always be a lot of noise, but you should know how to minimize that noise. And what does that mean? इसका मतलब ये है कि the writer will give you many examples to explain his main idea. ठीक है. वो हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इजी करके या सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है, बट ये तुम्हें समझना पड़ेगा दैट द एग्जाम्पल इज जस्ट व्हाट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट टू help you simplify the passage but not the main idea. So it is one of the supporting details but not the main detail. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, if a passage gives multiple examples of memory errors, तो इसका मतलब है वो आपको ये समझाना चाह रहा है, वो एग्जाम्पल्स नहीं समझाना चाह रहा है, वो ये समझाना चाह रहा है कि हाउ योर मेमोरी कैन फॉल्टर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. तो इसका मतलब है मेन आइडिया तो ये है कि वो समझाना चाह रहा है अबाउट द फैलिबिलिटी ऑफ मेमोरी. दैट मीन्स हम गलतियां कर सकते हैं क्योंकि हमारी मेमोरी भी समटाइम्स कंफ्यूज हो जाती है. वो ये समझाना चाह रहा है, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको ईजी करने के लिए समझा रहा है. Then moving to look at the first and last lines, it's very, very important because introductions often set up the theme. That means introduction is basically the pillar or the foundation on which the buildings, आप बोल सकते हो, architecture is laid on. तो introduction या introductory line जो होती है वो बहुत important होती है क्योंकि it sets the theme, it sets the tone. And similarly, conclusions also often help you restate it. Restate का मतलब होता है repeat that particular information. एक तरीके से आप बोल सकते हो tying the loose ends and coming together at the very end. So that is what your conclusions are meant for. So moving forward, together they act like bookends to the main idea. अगर हमें दोनों ही चीजों को अच्छे से join करना आ गया, इसका मतलब ये है कि हमने मेन आइडिया निकाल लिया है. So you need to understand that the introductory paragraph and the concluding paragraph play a pivotal role in order for you to find out the right idea or the right title of your passage. Then moving to the next one, finding the title. अभी तक हम main idea discuss कर रहे थे. अब एक चीज समझो कि main idea जो है वो फिर भी थोड़ा सा लेंदी रहेगा, but title is just a shortened version of that main idea. ठीक है. Coming back to यहाँ पे देखो, अ कंसाइज क्रिएटिव लेबल फॉर द मेन आइडिया. तो मेन आइडिया अगर हमारा निकल चुका है तो आपको इसी को ही एक फन, क्रिएटिव और कंसाइज वे में समिट अप करना है. मतलब कि यू नीड टू यूज lesser words, you need to be crisp, you need to be to the point when you are explaining or giving your title of the passage. क्योंकि टाइटल मेन आइडिया से बड़ा तो नहीं हो सकता है, राइट? सो सबसे पहले तो टाइटल इज इक्वल्स टू मेन आइडिया इन शॉर्ट फॉर्म. जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेन आइडिया है डेटा इज द न्यू मेजर ऑफ पावर इन जियोपॉलिटिक्स. और आजकल तुम सभी को ही पता है कि इन जियोपॉलिटिक्स whenever it comes to the
politics of multiple countries, nowadays you will only be considered as somebody, a force to be reckoned with if you have data power. तो यहाँ पे वही बताया गया है. So title could be data, the new battlefield, क्योंकि सभी डेटा एक्यूमुलेशन के लिए लड़ रहे हैं. ठीक है. So this could be an idea title which kind of shortens this and still provides you the crux of the passage. ठीक है. Moving to the next one, avoid overly narrow titles. What does that mean? इसका मतलब ये है कि something which captures the passage only partially can never be your title. Similarly, something that captures the passage only partially can never be your main idea as well. ये भी याद रखना, अगर passage में 5 चीजों के बारे में बात हो रही है और title में सिर्फ 2 चीजों की, तो obviously it is a narrow option. वहीं पे उसे eliminate करना है हमें. ठीक है. So if the passage is about ambiguity in novels, don't pick a title like The Strange Case of Hamlet, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, particular या narrow हो जाता है. अगर मैं सारे novels की बात कर रही हूँ, तो how can I pick just one novel in specific? ठीक है, वो उस चीज को लिमिट कर देता है. तो अगर पैसेज ही ब्रॉड है तो नैरो टाइटल नहीं हो सकता है. Then moving to the next important pointer, keep it neutral unless author pushes it on. What does that mean? That means, देखो, title is something which is common for everybody. ठीक है? It cannot really be biased, and 99% it's not biased until and unless the writer is aggressively pushing his idea. अगर राइटर अपने आइडियाज को बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपको आपके ऊपर पुश कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ओनली इन दैट केस योर टाइटल कुड बी पार्शियल. ठीक है. तो याद रखना कि यूजुअली टाइटल्स जो होते हैं वो काफी न्यूट्रल ही रहेंगे. If the passage is critical, avoid a celebratory title. I think this is common sense. If the writer is being very harsh or abusive or using foul language about a particular area, about a particular aspect, then you cannot simply choose something which is of a happier mood, right? Match the mood, which is very important. Titles are short, punchy, long, wordy. So, इसका मतलब ये हुआ कि you are always supposed to pick a title which is short and punchy rather than something which is long and wordy. क्योंकि titles का मतलब ही ये है कि कम शब्दों में ज्यादा बात. It's an outline of the passage. ये समझो. ठीक है. टाइटल पढ़ते से ही मुझे एक आइडिया आ जाना चाहिए कि okay, this is what I'm going to read about, right? So exam titles are usually 2 to 5 words long, not full sentences. Make sure that you keep this in mind when you're picking your title. And some common traps to watch out for. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं when they get stuck between two very similar options. So first thing is extreme language. ठीक है. हाँ, कमिंग बैक टू आर्यन, दैट इज अ वोकैबुलरी प्रॉब्लम. देखो, एक चीज है, वोकैबुलरी इज अ लॉन्ग स्ट्रेनियस प्रोसेस. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन एवरी सिंगल डे. तो याद रखना कि अपने मॉक्स की जो वोकैबुलरी है उसे रिवाइज करते हुए चलो. योर एडिटोरियल्स दैट यू हैव बीन रीडिंग एवरी सिंगल डे, कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल्सो द RSMs, the mocks, the assignments that you generally solve, uski vocabulary. You don't really have to overwhelm yourself. All you need to do is just pick 10 random words for the day and revise it 5 times during the day. Itna time hum sabhi ke paas hai. If we do not have that kind of time, that means we are simply making excuses. So एक चीज याद रखो, 10 words उठाओ, दिन भर में जब जब टाइम मिले नोटबुक खोल के just go through it and you will be good to go. And on the 7th day, which is Sunday, you can just simply create an exercise for yourself using Chat GPT, Gemini, whatever you are comfortable with, using those 70 words that you have learned throughout the week. So iske through you will be accountable as well that you are doing something productive. Now coming back to extreme language, options which say words like always, never, the only are usually wrong. Usually wrong, ठीक है, हमेशा गलत नहीं होते हैं. तो एक चीज याद रखना, if the passage speaks about something in extreme words, then the option could be an extreme word option. अगर passage में भी extreme words हैं उसी context में, तो option वाला extreme word भी valid है. But अगर passage में बहुत casually कोई चीज की बात हो रही है, but option में very extreme words have been used, then obviously you're going to negate it. Now here, example as main idea trap.
Always remember, they pick up an example from the passage and then they give it to you as one of the options. Just because you've seen it in the passage, you kind of feel, oh, I have read it somewhere, so let's pick this as our answer. But that's only a trap. जहाँ पे भी आपको एक specific detail from the passage, एक example from the passage मिल रहा है, it is only to put you in a state of confusion. ये याद रखना, ठीक है? Detail obsession का भी मतलब वही है कि if the option mentions one tiny detail from the passage, just because you have seen it somewhere does not make it your main idea or your title. You need to ask yourself and ask for validity. Like, do I get an evidence that the whole passage is around this particular idea? If not, then how can this be my answer? ठीक है? So, moving to the next one. Uh, Lakshman, wait a second. पैसेज को रीड करता हूँ तो डिस्ट्रैक्शन होता है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो डिस्ट्रैक्शन होता इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, एज सिंपल एज दैट। तो बात ये है कि यू नीड टू ट्रेन योर हेड। आई कैन नॉट रियली हेल्प यू फ्रॉम नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आई कैन सिंपली हेल्प यू टू बिकम बेटर एट रीडिंग। दैट इज समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली हेल्प। सो जनरली हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि चीजें समझ में आना बंद हो जाती है हमें, ठीक है? So I generally tell people that when they are engaging in diversified reading, always pick out the difficult words first and find their meanings. क्योंकि जब आपने difficult words के meanings ढूंढ लिए तो automatically the passage gets simplified and you are able to understand it better. And that way हमारा ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो पहले तो अपने आप से बात करो, गिव योर सेल्फ अ पेप टॉक। इसका मतलब ही ये है कि यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वेदर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू और नॉट, whether I can think about whatever I am thinking about after I am done with this assignment. क्या ये अभी सोचना जरूरी है कि मेरे दोस्त के साथ मैं घूमने कहाँ जाऊंगा, या मैं 1 घंटे बाद भी कर सकता हूँ? ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू राइट डाउन द क्रक्स ऑफ द 2 paragraphs that you have read. Yeah, you need to explain that paragraph to somebody else so that it ensures accountability. अगर तुम दूसरों को समझा पा रहे हो वो पैसेज, इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है? So now moving to the next one. uh, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो कमिंग बैक टू टू ब्रॉड और जेनेरिक ऑप्शंस। टू ब्रॉड टू जेनेरिक का मतलब ये होता है कि व्हेन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग एंड आप बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट ऑप्शन में आपको एक बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन मिल जाता है। तो जनरली मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स, बट ऑप्शन में आपको जनरली डांस के बारे में कोई चीज पूछी गई है, ठीक है? तो मैंने पैसेज में एक बहुत ही क्लियर आइडिया दिया था कि मैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स डिस्कस कर रही हूँ, नॉट एवरी डांस फॉर्म विच इज पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दैट मीन्स वो एक ब्रॉड या जेनेरिक बहुत जनरलाइज्ड ऑप्शन है, तो उसे भी इग्नोर करना हमें आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई होप यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. Now we are going to solve this together. I have intentionally picked up paragraphs which are smaller, but they are moderate to difficult in their level of difficulty. ठीक है? So that we can discuss it in record time, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है but हमें चीजें ज्यादा करनी है. So coming back to, let's see the first question. Whatever you think as your answer, please feel free to write that in the chat box. And do not be afraid of making mistakes. By the way, इसी particular passage पे आपको title भी पूछा जाएगा.
Ready to discuss? ये भी देख लो. Again, it is based on the same paragraph. Please write the question number so that I know that you have given the answer of this specific question. Chalo. Many people might have gotten confused here, but let's try to understand what this paragraph is all about. ठीक है. यहाँ पे बोला है the poet does not merely describe a rose. By the way, rose has been used as an example. Do not get confused by rose as your main idea. It's just used as an example to make you understand how things are ephemeral. Ephemeral का मतलब होता है something that is mortal, something that dies after a certain period of time, something which is perishable. जैसे कि ह्यूमन लाइफ, हम भी तो किसी ना किसी दिन मर ही जाएंगे सभी लोग. Similarly, plants, animals. So usually, if you look around yourself, you will see that things do not last forever. Rose is just an example of one of those things. तो वो यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि the poet isn't simply just talking about a rose. She's actually, through her poetry, making it live on in people's minds. इसका मतलब ये हुआ कि आसपास की चीजें जो हैं वो पेरिशेबल है, एक ना एक दिन सब चीजें खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. बट इफ अ पोएट हैज रिटन अबाउट इट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, भले ही वो पोएट भी मर जाए, उसके बावजूद भी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल गेट इमोर्टलाइज्ड. दैट मीन्स आप आज से 100 साल बाद भी वो पोएट्री पढ़ोगे, यू विल स्टिल बी एबल टू रिलेट विद इट. ठीक है, कुछ समझ में आया? तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि once a poet has written about a particular topic in his work, maybe he has written a poem about it, it becomes timeless. It becomes frozen in time. And literature doesn't just, आप बोल सकते हो preserve or save beauty. ठीक है, इट एक्चुअली चैलेंजेस डेथ इटसेल्फ. क्योंकि अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, और इफ यू टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ और मे बी टी.एस. एलियट, इफ यू रीड देयर वर्क्स टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, you still understand them, even though the writers of these particular works, they have been long dead. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आंसर होना चाहिए? आई थिंक सुभजीत, वो बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन पूछा है तुमने. एजुकेशन लोन एक चीज होती है. आई थिंक इफ यू आर okay with that, you can go for that. And obviously, if you get a good rank, most of the things kind of get waived off in scholarship. तो अब बात करते हैं यहाँ पे what could be the answer. Main idea. So if you look at option D, which many people marked as their answer, but is not the answer. क्या पूरे passage का focus flowers पे था कि how flowers actually inspire poets more than anything else? पहली बात तो क्या comparison हुआ of flowers with other things कि writers ये prefer करते हैं over that? बताओ. Option D. You need to answer this. Because if you have chosen this, you need to know from where you have found the evidence. तो बताओ. Has the writer compared these flowers to anything else and said that I prefer flowers better than any other object to write poetry upon? No comparison has been made. Plus, this is not really the main idea that it's only flowers that inspire the writers to write. Memory fades, but poems stay. Although this is a
I would say a very tempting option. ठीक है, it's the second best option, but it's very vague. Vague का मतलब क्या होता है? Unclear or too broad. क्योंकि बात यहाँ पे ये हो रही है कि memory fades but poems stay is not really the main idea. Main idea is how, if a poet writes about something, it becomes immortalized. अमर हो जाती है वो चीज, अगर एक राइटर ने उसके बारे में लिखा. तो इसीलिए this could not be our answer. Roses are the most common subject of poetry. Was this what the writer was trying to convey to you? That सबसे ज्यादा जो चीज पे poetry या prose लिखा जाता है, it's the roses. Again, it is a preposterous option. It is very, very specific and also not our main idea. So the only answer that remains is this: poetry immortalizes transient beauty. Transient beauty means something we have learned a new word as well. Something that lasts a short time, right? Moving to the next one. Best title. Again, was our focus literally on roses and gardens? Because this is a literal option. Obviously, no. We talked about mortality in verse. Mortality in verse का मतलब ये होता है कि the things might be mortal around you, but if the poet writes about that, they become immortal. That was the main idea, and this is our answer. Poetic imagination, again, poetic imagination becomes too broad because you can imagine hundreds of different things, but that is not what the passage was trying to convey. ठीक है, तो इसीलिए again too broad and unrelated. The blooming rose, again the focus has been given to rose, which is not really our main idea. Just an example, used just as an example. Okay, how many of you have got both of them correct? And by the way, it's time for us to see the second paragraph. पैसेज समझ में आया कि कैसे आइडिया निकला, कैसे हमने टाइटल निकाला. See, I've already discussed in this session how can you improve your comprehension by first of all highlighting all the difficult words, finding their meaning so that you can simplify the passage for yourself. Try implementing that and let me know in the next session whether that helps. Also, once I explain the passage, if there's anybody who would like to change their answers, you're free to do that. Taking you to the next one. Please answer this one and then we'll discuss the paragraph.
लेट्स डिस्कस। पहले पैसेज समझते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि यू डू नॉट हैव एनी रूल्स टू फॉलो एट ऑल। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस विद अ वेरी सिंपल थॉट, समथिंग दैट माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से। तो वो हिंदी में बोलते थे कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। कुछ समझ में आया? कि जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट फ्रीडम डज नॉट मीन कि अब आप मनमानी कर पाओ। अब कुछ समझ में आया? तो बात यहाँ पे ये है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि यू डू नॉट हैव टू फॉलो अ सिंगल रूल। इट मीन्स फाइंडिंग लिमिट्स दैट एक्चुअली गिव लाइफ मीनिंग। तो आपके पास फ्रीडम है, बट आपको ये भी पता है कि हाउ फार और टू व्हाट एक्सटेंट यू शुड गो। वो जिसको पता रहता है उसकी लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी रहती है। ठीक है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफ अ बर्ड। ठीक है? अ बर्ड इजंट जस्ट फ्री बिकॉज इट कैन फ्लाई एनीवेयर। बात ये है कि अ बर्ड नोज इट्स लिमिट्स बिकॉज इट नोज कि कब वो जो विंड है इट कैन हेल्प इट टू सोर हायर इन द स्काई, बट इट ऑल्सो नोज when to stay, आप बोल सकते हो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्री और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग when the weather is not up to the mark। ठीक है? तो बात यहाँ पे ये है कि आपके पास फ्रीडम तो है, बट इफ यू नो how to use that freedom by respecting the limits that you have, that is what makes life meaningful। तो हमारा भी अगर हम बात करें अपनी खुद की लाइफ की, तो ह्यूमन फ्रीडम की अगर हम बात करें, तो इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रिजेक्ट ऑल द बाउंड्रीज इन योर लाइफ, ऑल द रेस्ट्रिक्शंस। यू हैव टू रिबेल अगर कोई भी आपके ऊपर कोई लिमिट्स या रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करे। नो, दैट्स नॉट व्हाट फ्रीडम मीन्स। इट एक्चुअली मीन्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फ्रीडम बाय अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स। आया समझ में? तो अब मेन आइडिया क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए लगाया। ऑप्शन ए का मतलब होता है कि लिमिट्स की वजह से फ्रीडम जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या ये थी पूरे पैसेज का मेन क्रक्स? बताओ कि बिकॉज ऑफ लिमिट्स आई कैन नॉट फुल्ली यूटिलाइज माई फ्रीडम। इज दैट व्हाट द पैसेज ट्राइंग टू इम्प्लाई? Yes or no? I need an answer. I won't be giving you the answer unless I get an answer in the chat box, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज में क्या ये बोला गया कि लिमिट्स की वजह से मैं फ्रीडम को अच्छे से यूज नहीं कर पाती? नो। वेरी गुड गाइस। Birds are metaphors for life. Birds have been used as an example. ठीक है? They haven't been used as something to, आप बोल सकते हो compare with life. Used just as an example. So no, they are not metaphors for life. Freedom is possible only within limits. Yes, that is the main idea. कि freedom आपको मिले और उसके बाद आपको पता है how to stay within the limits to enjoy it. That is what makes your life meaningful. So this is the answer. Choice is meaningless. The author wasn't really talking about options or choices that we have. So इसीलिए bye bye option D। बेस्ट टाइटल मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। तुम लोगों ने एक चीज खुद से पूछी कि मीनिंगफुल लिमिट्स डज नॉट रियली टॉक अबाउट फ्रीडम एट ऑल, बल्कि पूरा पैसेज फ्रीडम समझाने के लिए था थ्रू मीनिंगफुल लिमिट्स। सो हाउ कैन यू मिस आउट ऑन सच एन important detail? Was the passage about meaningful limits or was the passage about freedom and understanding limits? So, no, this is not the answer. 90% of the people mark this as the answer. Answer is the paradox of freedom. एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 100% freedom है, ठीक है, I have the liberty to do whatever. But on the other hand, the writer has made very clear that you need to stay within your limits to enjoy that freedom. And that is the paradox. Paradox का मतलब होता है खुद ही को ही contradict करना,
ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. सो आंसर इज ऑप्शन बी. Please look for passage 3 now quickly. Showing you the next question. Oh, I think we have got just one question here. Okay, coming back to passage बहुत easy था. And it talks about how memory isn't like a camera, because the camera, when it prints the image, it's exactly what it saw. ठीक है, तो मेमोरी हमारी ऐसे काम नहीं करती है कि जैसा हुआ था वो एग्जैक्टली आप बोल सकते हो डिटेल टू डिटेल हमें चीजें याद रख पाए हम लोग. सो इट्स मोर लाइक अ पेंटर पेंटिंग समथिंग ऑन हिज कैनवस. Every single time the painter picks up his paintbrush, he will add a new detail. He'll probably erase some of the things that he does not find suitable. He might, add something brand new or creative all of a sudden. And that is exactly what memory is all about. So बात यहाँ पे ये है कि when we think of something, when we remember something, it's not just like, pressing the button replay. मैंने रिप्ले कर दिया और वैसे का वैसा एग्जैक्टली पूरी स्टोरी मेरे सामने स्टार्ट हो गई. नो, वी ऑलवेज कीप ऑन रीशेपिंग दोज लिटिल डिटेल्स हियर एंड देयर. आप बोल सकते हो कि मेमोरी इज फ्लूइड. ठीक है, और वो छोटे मोटे चेंजेस जो होते हैं वो बनाती रहती है. ठीक है, तो किसी को भी एग्जैक्टली याद है क्या कि बचपन में हम क्या किया करते थे? बट या, वी डू हैव, आई वुड से, a rough idea as to what we used to do, what we used to do for fun, and what are the things that we want to remember. तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी मेमोरी का ही पार्ट है. बट हर बार आप जब सोचोगे उस चीज के बारे में तो वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देगी, या मे बी इट विल सब्ट्रैक्ट अ डिटेल from that memory. So that is what it is. ठीक है, answer I think is pretty clear and 100% people gave the right answer. Memory is reconstructive, not fixed. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक रिप्ले का बटन है हमारे दिमाग में और वो बटन दबाया एंड अगेन द एंटायर फिल्म एज इट इज स्टार्ट्स प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू. नो, ठीक है, इट कीप्स मेकिंग चेंजेस, सो इट इज रिकंस्ट्रक्टिव, कीप्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग इटसेल्फ, राइट. मेमोरीज आर फोटोग्राफ्स, इसको यहाँ तो मेमोरीज को ही फोटोग्राफ्स बोल दिया गया है. So this is just a metaphor, but not really the main idea of the passage. Imagination has nothing to do with memory. By the way, memory without imagination is nothing actually. So this is first of all an idea which has not been discussed in the paragraph, and secondly, this is something which is ridiculous. क्योंकि imagination or memory, no, I think they go hand in hand. Painters have better memories. So the whole sole idea of the passage wasn't just to establish that painters have better memories. ठीक है, ये तो पूरे पैसेज का क्रक्स नहीं था हमें समझाने के लिए, तो ऑब्वियसली this is something which cannot be the main idea. Option A is our answer. Let's see who gets this right.
Taking you to the next one. Ready? Okay. So this is something that I already discussed in the beginning of this session. अगर हम आज की दुनिया की बात करें in today's world, real power does not really come with only, having the most weapons. But actually, if you want to assert your dominance, you need to actually be somebody who controls information. आज के ज़माने में जिस भी country ने information control कर ली, automatically they will be leading the entire clan, right? So countries that actually can manage data of different countries, they can even govern, the politics according to what they want, or they can even solve conflicts, or they can even make decisions, important decisions in market dynamics. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिस भी कंट्री के पास ये एबिलिटी है टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, दे कैन एक्चुअली कंट्रोल every single thing in the world, right? So war is no longer only fought on the battleground anymore. War is actually also happening online, and that's what the passage is all about. Now, let's see the main idea. Very specific. Tanks are outdated. ये पढ़ने के बाद क्या तुम लोगों को ये समझ में आया कि आजकल कोई टैंक्स यूज नहीं कर रहा है? Very narrow, too specific. Wars are fought only on the internet now. Is the writer trying to tell you that the real wars are happening online? No. But he did say that आजकल battlefield पे भी wars हो रहे हैं और cyber space में भी wars हो रहे हैं. Cyber space is dangerous. This is one aspect which was not discussed in the passage, that cyberspace is a dangerous place. Instead, it has been told to us that whoever controls cyberspace is also the king of the world. ठीक है? That is a very different idea. So, a different idea. And, sorry, sorry again. Data has replaced military might as the measure of power. Yes, that's exactly what we are trying to establish. Military might का मतलब होता है military power. So nowadays, whoever has the data, whoever has control over data, is somebody who is also controlling every other thing in the world. So this is the answer. And the last question for the day, by the way. Best title. I think ये भी तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा. The age of data power is the answer. From tanks to tweets, it's catchy, but too casual. और इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है. Cyberspace wars does not really talk about actual battlefield वाले wars. ठीक है, battlefield के बारे में भी बात हुई थी. That wars are fought in the battlefield as well as the online space both. ठीक है, आंसर इज ए. द न्यू battlefield जो बहुत सारे लोगों ने चूज किया अपना आंसर, बाय द वे, टू वेग. द न्यू battlefield ऑफ व्हाट? क्या इसका आंसर मिल रहा है तुम लोगों को? किस चीज का battlefield? Could be a battlefield for ideas, could be an online battlefield, could be a battlefield for who has more power. तो क्या इसका आंसर मिला जितने भी लोगों ने ये चूज किया था? So the correct answer is option A. And that is it from my side, guys. So I hope today's session was productive for you guys and you learned something out of it. I'll be meeting you soon. So we'll have another 25-minute short capsule
kind of a session so that it teaches you something. It also, helps you strategize your general preparation. So, yeah, this is me signing off. Bye bye. Have a great day.